Um, Ladies and gentlemen, do you know that most cancers in women are preventable? Myself, Upasna, Senior Communications Executive, Hemophilia Federation India, extends my good evening wishes and a very warm welcome to episode 4 of HFI's National Webinar Series. Today, we are excited as we will delve into Women's Health Insight. This webinar, organized in collaboration with the Women's Group of HFI and the Hemophilia Society Nagpur chapter, promises to be enlightening and empowering. I would like to invite Indira Nair ma'am, chairperson of the Women's Group of HFI, to kindly welcome our guests and office bearers. Thank Indira you. ma'am. Good evening, everyone. And as we begin, I extend a heartfelt welcome to our esteemed guests, speakers, and participants for joining us today. Your presence here is a testament to your commitment to learning and advocating for women's health issues in the bleeding disorders community. Speakers Dr. Prachi Mahajan Kulkarni and Dr. Mugdha Jungiri Gill, we are truly humbled and honored to have you both with us to share your insights on breast cancer awareness and menstrual hygiene and with cervical cancer prevention. So, without taking much of your time, let me introduce to our first speaker, Dr. Prachi Mahajan. Her bio slide is shared here with on the screen. She is MS, FRCS Glasgow, UK, FMAS, FIAGS, MS from Mumbai, FRCS Glasgow, fellowship in advanced. In short, we'll do, ma'am. It's Okay. I'm basically a breast cancer and laparoscopy surgeon. Yeah. So yeah, and I'm very passionate about conducting awareness camps. So I think that is sufficient for this session. Okay. Thank you. Thank you. So we'll move to your presentation directly. Or you want me to? You will have to exit screen sharing, ma'am, so that I can not mind. Oh. Shall I share my screen now? Yes. Yes, ma'am, you can. Yeah. Is it visible? Is Yes, my screen visible? Yeah. Yes, ma'am. Right. So I'll just switch to presentation mode. Right. So without as much ado, I'll just start talking, and I will be speaking in English. And wherever I think it is important to explain twice, I will also speak in Hindi and English both, so that I want the message to reach everybody, and I want everybody to understand what we're talking about. So I'm basically from a surgeon. Am I audible now? Yes, ma'am, you are. Okay, right. So this is something which we must all know the scope of. I'm not able to go into presentation mode. 1 second. And I don't know why I'm not able to move ahead with the slide. That's it. Please share it once more, ma'am. Yeah, I'm doing that. If I can just, resume slide. Here you are able to. Yeah, I'm able to show one slide. Let me, yeah, now it's fine. Yeah. Okay.
So, as I just said, breast cancer is the most common cancer affecting women. Nowadays, if we see, almost every extended family has one patient of breast cancer, at least one patient of breast cancer. And that is why all of us, a doctor of any specialty as well as the general public, should be aware of the basics of what breast cancer is. Because we should be able to educate people around us regarding the importance of early diagnosis, which can never be overemphasized. So then everybody should be aware of the consequences of breast cancer disease, and that is how people will actually take it seriously. As we all know, the management of breast cancer is a multidisciplinary treatment. So it is not just surgery or just chemotherapy. Most people are scared of going to a doctor because they are scared of surgery and scared of chemotherapy. But as we shall see in the presentation, that is not all there is. The treatment is always multidisciplinary. A surgeon is the first person who comes into the picture in most cases, and then all patients do not require all the other therapies that everybody knows about breast cancer. Now, any cancer, we talk about any cancer, early detection, that is diagnosis in the early stage of the disease is very important. And a disease is said to be curable only when it is diagnosed early. So, अगर कैंसर के का डायग्नोसिस डिटेक्शन अगर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में हो जाए ब्रेस्ट कैंसर का, तो पेशेंट पूरी तरह से अच्छा हो सकता है, तबीयत ठीक हो सकती है, 100% नॉर्मल हो सकता है. So that is the importance of early detection. अब पेशेंट को अगर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स लगते हैं तो पेशेंट के रिएक्शंस कैसे होते हैं. कोई भी लेडी हो, अगर उनको फील हो कि ये कुछ तो ब्रेस्ट में है जो एबनॉर्मल है, पहली चीज वो ये करती है कि वो खुद टेंशन लेती रहती है पर किसी को बताती नहीं. घर पे they don't tell anybody in the family that there is a problem in their breast. So they just keep it to themselves, and that is a waste of time as far as breast cancer is concerned. So clinically, and then okay, so then somehow they look depressed and whatever, and the family members start asking them questions, what has happened, and then they come out with something like, there is, I can feel something in the breast which does not seem to be normal, yeah, there is a lump or something. And then they go to any doctor, mainly a family doctor or a gynecologist, and or they may go to any Ayurvedic or a homeopathy physician practitioner, and that is when most people get misled. So I have been conducting these activities to even make gynecologists aware of what should be taken seriously. I know that gynecologists are very well qualified and they are aware of most of the serious signals which come with breast cancer. But even then, I find regularly that patients are not referred to a surgeon early, and that is where the time is wasted. So the proper person to be consulted, the proper doctor to be consulted is a surgeon in case of any breast problem. And what would the surgeon do? So here I'm going to just talk about the role of a surgeon. Many people think कि surgeon को दिखाया मतलब immediately surgery. So that is not the case. A surgeon is a person who is a clinician. So the surgeon will first examine clinically, see what are the symptoms, what are the signs, what are the findings, and then discuss what options and what protocols are needed, what diagnostic tests are needed to prove whether it is that particular problem or a lump is a cancer or it is non-cancerous. So the role of a surgeon is first of all in diagnosis, in discussing various treatment options, then offer surgical treatment, follow up, follow up of a patient after the surgery is done, and so on and so forth. So I will not discuss it here. Now, when we talk about breast cancer, there are certain things which are very, very important in patients with breast cancer. And which patient should be worried? Which lady should be worried that she could be having a cancerous lump? So, the commonest symptom that is present is usually a lump.
गांठ लगना हाथ को, anything which feels abnormal in the breast or any particular area of the breast which feels hard or like a knot in one particular area or one or more particular areas. So that indicates that there is something which is not normal. Now, that does not decide that that particular gland is malignant or cancerous. It could be a benign or a non-cancerous tumor also. So, one must go to the doctor and show the surgeon whenever there is a lump. So, the other symptoms which are associated with breast cancer are sometimes there could be some discharge, some fluid coming out of the nipple. Now, even most fluid discharge from the nipple is non-cancerous. So only a few types of discharges, such as sometimes thick blood coming out of the nipple, that could be one indication of a breast cancer. That does not mean that every patient has a breast cancer, so it needs to be evaluated properly by the surgeon. Sometimes there could be skin changes. If the stage is it is in an advanced stage, there could be localized thickening of the skin, and the skin actually looks like an orange peel, thickened skin with dimpling. So that is a most common sign of advanced cancer. So these are three common symptoms of breast cancer. Sometimes it may involve only the nipple area and the area around the nipple, which we call the areola. And there could be some itching or flaking or some ulcerative changes in that particular area. So any such things should be alarming and they should take the patient to the surgeon. Now, when we talk about any cancer, we have to discuss. We all know that any cancer has stages, whether it is a first stage, second, third, or fourth stage. So, the first stage in this case is the simplest and the most easiest to treat. That is characterized by a small breast lump, which is less than 2 centimeters in size. As the size goes on increasing, the stage goes on increasing. And along with the size of the lump, there are some glands which appear in the underarms. So whenever we examine a patient, we examine the underarm region, the armpit or the axilla, because in advanced stages, lymph nodes or certain glands appear in that area. And in stage 4, that is very advanced breast cancer, there will be spread of the cancer to other organs, such as the brain or the bones or the liver or the kidneys. So these are the common organs. So this is about staging. Now, when we talk about diagnosis of breast cancer, the first and foremost is in breast cancer diagnosis is a clinical examination. But before that, we need to emphasize the importance of breast self-examination, because breast is an organ which is outside the thoracic cage or outside the body, so to speak. It is very easy to examine the breast by the patient herself. So we recommend over the age of 35, breast self-examination should be done by every woman after the age of 35, wherein while taking a bath, the lady has to take some soap on her fingers and rotate the hand in circular motions around the breast. So the hand should be kept flat, the hand should be kept open. If a woman tries to press the breast tissue between her fingers, something abnormal will always be felt, but actually that is normal tissue. But the importance of self-examination is to keep the fingers straight and rotate them around the breast in circular motions. And at that time, if the tips of the fingers can feel anything which is abnormal, the person needs to go to the doctor immediately, at least to rule out whatever the pathology may be. So once you come to a surgeon, what we would do, what a surgeon does, is to examine the breast with his or her hands. And clinically, there are certain characteristics by which we can suspect that that particular lump or tumor, whether it is cancerous or not. So a cancerous tumor usually appears as a very hard tumor,
and it could be irregular and it does not move, it remains fixed. Sometimes, if it is larger and more advanced, it can be stuck to the skin or it could be stuck to the underlying muscle or bone. So, that is known as a locally advanced breast cancer. Now, once a lump is seen, the next thing the doctor would advise is some form of imaging. Imaging is a radiologic investigation. So, the commonest and the first and foremost, what we recommend is a mammography. A mammography is a machine which is specially made for imaging the breasts. It compresses the breasts in both directions, that is side to side and up down. And that is how it takes X-ray images of the breast. Combined with this X-ray, an ultrasonography, that is a sonography or an ultrasound examination of the breast is also performed, so that mammography, which includes an X-ray and a sonography, together give us a clue about what type of tumor it is. If there is any doubt, there are other specific or more specialized radiological investigations such as an MRI or a CT scan or a PET scan or a bone scan, which may be required. So a mammography image, an X-ray of the breast looks like this. And the white area which you see, is a cancerous tumor. So on mammography, we see that it is an irregular tumor. It is very dense. It is white looking on this image. So this is a malignant tumor. This is what an MRI looks like. So an MRI will show more advanced or a more definite picture, a high definition image of the breast, wherein even the smallest of tissues can be seen appropriately. Now, once we know or we suspect from these radiological investigations that it could be a cancerous tumor or it is more likely to be a cancerous tumor, we would send the patient to a pathologist. And what would the pathologist do? Initially, we used to do a needle biopsy, that is an FNAC or a fine needle aspiration cytology. But nowadays, with more advanced techniques available, FNAC is not considered a gold standard of diagnosis. So, what is most important and what is considered the gold standard is a core biopsy. If you look at the picture, this is a needle. It is a very thin needle which is inserted into the breast under local anesthesia. So it is a painless procedure. The patient will not feel pain. This needle is not entirely inserted. So, somebody would see the length of the needle and get scared. It is not like that. It is inserted up to a few centimeters under ultrasound sonic guidance to locate the tumor, and small cuts, very small cuts are taken from the breast tissue. So this is the biopsy, and the biopsy specimen is sent to the pathologist for evaluation and for diagnosing that it is, to prove that it is a cancerous tumor. The other thing which can be done in cases where a core biopsy is not possible. Sometimes the lump is so small that it is not possible to even insert this needle. So sometimes we may need to remove that lump itself and send it for a pathological test. But nowadays with frozen section techniques and so many advances in pathology, we don't actually need to do excision biopsy in most cases. So what will a pathologist tell us? A pathologist will tell us, first of all, that this is a malignancy. This is a cancer. The pathologist will tell us what type of cancer it is on a cellular level. The pathologist will also do some hormonal profiling of the tumor, and these alphabets which may look difficult to understand, ER, PR, HER2, neu. All these are receptors which are present on the breast tumor. So mainly the treatment depends upon whether what type of tumor it is. And there are other specialized investigations such as immunohistochemistry and immunofluorescence and genetic assays. So this is for the pathologist and the treating surgeon to decide. But this is what? So mainly clinical examination, radiologic tests, and pathologic tests. So these three things are done before we can actually diagnose and confirm our diagnosis of a malignant tumor.
Now, the next picture may look a little disturbing, but it is a diagrammatic representation which has intentionally been put that way. What you see in the black and white picture is the old days of surgical treatment. Okay, when the entire breast had to be removed along with the underlying muscles and underlying tissues and everything. So it used to be a big gaping hole on the breast for a woman, which was definitely very demoralizing and cosmetically unacceptable. So then it came to a modified radical mastectomy. This was a radical mastectomy. Then gradually with advances, with further research, compiling of data from centers all over the world, it was found that the entire radical procedure does not need to be done. And a modified radical mastectomy, that is removal of the breast tissue and the glands which are present in the underarms, that much is required. So this is a more cosmetically acceptable procedure, but still here the breast is removed. So still not totally good and not a very happy situation for the patient. So this is a mastectomy specimen, as I said, removal of the breast as well as the glands in the underarms. But nowadays you can see that this is the recent advance in surgery. It is very difficult to even see or make out if a surgery has been undertaken for such a serious illness. So this is breast conservation surgery. So patients are scared to come because they are always worried that the surgeon will remove the complete breast. But with today's technology, today's oncologic therapy, radiation therapy, genetic therapy, it is possible, it is very, very possible to save the breast. So in a conservation, what we do is we remove only the affected area of the breast. So if the lump is here, this kind of an excision may be done, and the entire breast does not need to be removed. Nowadays, we have even further advances in this, and even these small scars which are seen in this picture may not be seen because of oncoplastic breast surgery. So in oncoplastic breast surgery, what we do is, it is a form of plastic surgery which all breast surgeons have learned, and we all perform oncoplastic breast surgery. This keeps all the scars hidden. So whatever surgery we may do, including a very major procedure, we can still do it through a very cosmetic incision. So once this incision heals, it will not be visible to the patient or to anybody seeing it. So all these scars which are concealed, they are concealed in the normal skin folds, in the normal cosmetic axillary folds, or they may be hidden in such a way that they don't disturb the look of the breast and the cosmetic outcome. At the same time, what oncoplasty means is we transfer some tissues and mobilize some tissue from within the breast so that the symmetry on both sides is still maintained in spite of having removed a part of the breast. And overall, the appearance does not change. In larger tumors where we need to remove a larger portion of the breast, we can still use muscle from the abdominal wall or from the back, and we can give the patient a very good clinical outcome. So these are the various oncoplastic procedures. So this is a combination of oncosurgery and plastic surgery. That is why it is known as oncoplasty. This is another recent advance, which is a sentinel lymph node biopsy. So previously we had to remove all the glands, all these glands in the underarms were removed. But now with sentinel lymph node biopsy, what we do is we give a little injection here of a colored dye. All this is done under anesthesia, mind you. So it is, the patient is not conscious, the patient does not feel any pain. So we remove this little, we inject this colored dye here or a radioisotope dye inside the tumor or around the central part of the breast. And we evaluate the lymph nodes either with a small equipment or through a small incision. We take that little sample. We send that lymph node sample to the pathologist. Like this is the sentinel lymph node. We have given the blue injection here. The blue injection has gone and settled here. So this is the first lymph node which is affected. And then we take a little incision and we identify this blue node here. We send this lymph node to the pathologist for a frozen section.
So a frozen section examination is where the pathologist looks at the specimen immediately, processes the specimen immediately and gives us a diagnosis. So if the cancer has not spread to the axilla, then we need not remove all these nodes. So this is a very important advance and this maintains a very good cosmetic outlook. What I spoke about, mobilization of flap. So in case the whole breast needs to be removed, if the patient does not come early and the whole breast needs to be removed, we can still use muscle and reconstruct the breast. Now, the importance of mentioning all this is the breast can be saved. Very good look can be given only if the breast cancer is diagnosed early. If the cancer is diagnosed late, many a times the person needs to lose her breast, or we need to downstage a patient by giving her chemotherapy first and then try and remove only the affected area. Now, the second part which patients are scared of is chemotherapy, because we all know that chemotherapy has very severe side effects. But I must tell you that now the chemotherapy has evolved over the last 5 years so much that what is now given is very specific, targeted chemotherapy. It is not like every patient gets the same injections and same treatment and everybody will have the same side effects. It is not so. So all these genetic tests which are done, all the receptor studies which are done, they give us an idea about the severity of the disease, and accordingly we decide whether chemotherapy is required or not required at all. So from this we know the biologic behavior of the tumor. We can differentiate what is a good tumor and a bad tumor. So a good tumor need not need chemotherapy. A good tumor may need only some hormonal tablets. So that is the simplification of the treatment which is now available to us. And all these things, all these tests are very readily available and they are not too expensive. So they are basically affordable. But if it is going to preserve a woman's breast and preserve her self-esteem, preserve a good cosmetic look, all these tests and the treatment which we now have at our disposal is extremely important. So this is all in detail about the molecular biology, so I don't want to go into this. But the estrogen and progesterone receptors, which all women bear estrogen and progesterone hormones, which are produced by the ovaries, we know that very well. Some of the breast cancers are responsive to estrogen and progesterone, or rather, they are dependent upon estrogen progesterone. So higher the level of estrogen receptor and progesterone receptor on the tumor, the higher the chances are that they will respond to some hormone inhibiting agents. So these are a few. The commonest drug which most people know is tamoxifen. So that inhibits the growth of the tumor after surgery. And radiation therapy is another form of therapy. In most cases where we do not remove the breast, where we conserve the breast, radiation therapy is required because we need to protect the part of the breast which has not been removed. So basically, what we need to do is when we do a public awareness or an education program, we emphasize on breast self-examination. So again, it is extremely important that we encourage people in formats like this, or whenever we conduct an in-person camp, we encourage the people to do their breast examination regularly. What can that happen? If there is something serious, it will be picked up at a very early stage, which is basically what we aim for. People may come with something which is not cancerous, but even then they will be happy that it is not cancer. So I would say that most people, most young girls nowadays come, they're very, very scared of having cancer. But I must say that young people very rarely have cancers. It is not that they do not suffer from breast cancer, but the incidence is very, very low. So between 35 to 60 is the highest incidence of breast cancer. And women in this age group must get their selves examined, self-examination, and if they find anything, they must go to the doctor immediately. Regular mammography. Now, when we talk about, I'll take all these points together: regular mammography, high-risk individuals, and family counseling. So,
if there is a high risk of breast cancer in a family, like we know that there are BRCA1, BRCA2 genes which may be positive. Like everybody is, everybody knows who Angelina Jolie is, and she had the BRCA gene which was very strongly positive in herself. So she got her breasts removed prophylactically because the chances of her having breast cancer later on were almost 100%. And then she had a reconstruction. And now she is acting again. She is such a famous public figure, and she is absolutely fine. So, in case there are many patients in one particular family, we need to screen most female members for the BRCA gene. I must say that it is not only women who suffer from breast cancer, men also can have breast cancer. So even men must be aware that it is not gender specific at all. Other high risk individuals are those which have a less number of children, or they don't have children, or those who have not breastfed their children. So the traditional role of a woman to feed the child, that was a protective factor against breast cancer. Nowadays, we have many people who do not breastfeed their children, and that is one of the predisposing factors. Other predisposing factors are severe obesity, any underlying breast pathology, or a long standing non cancerous tumor also sometimes can convert into a malignant tumor. So, in high risk individuals, we recommend an annual mammography. So, that is the point to be stressed. So, in conclusion, I would say that what is important in any cancer, but specifically for breast cancer, we look at the overall survival rate and the in cases of advanced tumor, what is the quality of survival? So, quality of life we have to look for in patients with breast cancer, and the overall survival. So, with good treatment, early treatment, the overall survival rates, even after 20 years, are very, very high. So I hope we have been able to enlighten and educate about a few things regarding breast cancer from the scientific point of view. I would take questions maybe after Dr. Mugdha's talk, as whatever the organizers decide. Thank you once again for this opportunity. Thank you, Dr. Prachi Mahajan. Uh, it was a wonderful and very uh, important information that you shared. I had missed your introduction due to some screen problem. I'll give that now. So, Dr. Prachi has an extensive experience in breast cancer surgeries, GI, and laparoscopic surgeries in the past 21 years in Nagpur. She had done bariatric surgeries and diagnostic endoscopies. She is a recipient of Margaret Ortsdottir International Fellowship, USA 2019, in recognition for work in GI surgery, actively involved in breast cancer awareness, obesity awareness, and other health awareness initiatives. She is the president of the Association of Surgeons of Nagpur 2023-24. She is a faculty of major national and international surgical conferences, and she is very passionate about uh, theater, acting, writing, and fitness. Thank you. Thank you so much. One second. Thank you. So, thank you, Dr. Prachi Mahajan, for sharing your knowledge and insights on the important topic of breast cancer. We hope that as women, we will pay attention to the signs and symptoms of breast cancer and take preventive measures without delay. Moving forward, I would like to introduce our next speaker, Dr. Mugdha Jungari Gill. Her biodata will be shared on the screen.
Ma'am, is screen is visible? Screen is visible. I am actually finding it, enlarged. One sec. So Dr. Prachi Mahajan, no, Mugda, sorry. Dr. Mukta Jungari Gill, ma'am. She is MBBS, MS, DNB, FMAS. The Purple Women's Health Clinic, Gayatri Nagar, IT Park Road, and she is a consultant obstetrics and gynecologist, high risk pregnancy expert, and laparoscopic surgeon at K. Cuddles Hospital. She is an academician and researcher and done 20 international and national publications. She is an author of Stimulation Based Medical Care, The Future of Healthcare 2023. Also, she is the author of chapter in MCQs in Obstetrics and Gynecology for MD and DM Entrance Exam 2023. Not only this, she is an ex-associate professor and head of the unit Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai, MPSC. She is also an ex-associate professor and OB/GYN department in charge at Datta Mega Medical College and Shalinti Mega Hospital Research Center, Nagpur. Ex-attending consultant at Max Hospital, Saket, New Delhi, as well as ex-consultant gynecologist, CGHS, Nagpur, UPSC. I would like to request Indra ma'am to please welcome Dr. Mugdha Jungari Gill ma'am once again. Thank you. Dr. Mugdha Jungari ma'am, welcome and over to you. Thank you so much, Nair ma'am. And thank you so much, the entire team of Hemophilia Federation India. And I'll check my screen. Sure, ma'am, please. You can share. Is it visible? Yes, ma'am. Yes. So shall we start? Yeah, sure, ma'am. Sure. Okay. So let's start. My today's topic is मेरा आज का टॉपिक है menstrual hygiene and cervical cancer prevention. कि अभी there is a new vaccine which has come up कि HPV vaccine and हर तरफ ये बातें हो रही है कि वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए किसने लेना चाहिए तो और दूसरा तो हमारा menstrual hygiene वाला टॉपिक है ही तो we will discuss everything today. So first of all, जो girls हमारे पास आती है with hemophilia, those who are symptomatic carriers, they experience heavy and prolonged bleeding. लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि normal क्या है. तो अगर normal पता है तो हम abnormal को detect कर सकते हैं. And इसी तरह हमें treatment की जरूरत है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा. तो आपको कब gynecologist को consult करना है, कब इसे रोकना है, weakness होने से कब बचना है खुद को, ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए. Then there is reduced health related quality of life and adverse psychological effects and increased time lost from work. So these problems that these girls they do face during periods. So what are we going to talk about? आज हम देखेंगे what is menstrual awareness. Second is menstrual hygiene, self care and menstrual products. क्या क्या use कर सकते हैं sanitary products. Then menstrual disturbances क्या होती है and cervical cancer, ये जो new entity हम जानते हैं कि बहुत बढ़ रही है तेजी से, उसके risk factors, symptoms, prevention, everything we'll talk about it. तो हमें periods क्यों आते हैं? So every month, this is a uterus. ये diagram हमने शायद 12th में 10th में काफी बार पढ़ा है कि इस बारे में कि periods हमें क्यों आते हैं. तो हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, एग रिलीज होता है फ्रॉम आवर ओवरी एंड जब वो फर्टिलाइज नहीं होता उसके बाद हमें पीरियड्स आते हैं एंड वी definitely know that we are not pregnant and that's why we have this blood coming out through our vagina and that is a menstrual blood. So this process is called as menstruation. अब इस प्रोसेस को ये साइक्लिकल होती है
एंड कब इसे स्टार्ट होता है कि दीज डेज द गर्ल्स आर गेटिंग पीरियड्स अर्लियर। पहले एक 12 साल की एज में के बाद पीरियड्स आते थे, अभी हमें कुछ गर्ल्स काफी जल्दी उन्हें पीरियड्स आना चालू हो जाता है, उसे हम मेनार्की बोलते हैं। तो पीरियड्स उन्हें जल्दी आते हैं, हार्मोनल चेंजेस उन्हें जल्दी फेस करने पड़ते हैं, एंड इन सब का नॉलेज उन्हें नहीं होता। फिर ये हमें आज 12th में 10th में और उससे पहले भी उनको बताने की जरूरत है कि आज मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस क्यों होती है, उसके अराउंड क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती है। वी शुड मेक देम अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देन कुछ होते हैं जैसे पीरियड्स में दो टाइप के हॉर्मोन्स, एक पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन। पहले 15 दिन में ज्यादातर हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंट फेज होती है, जिसकी वजह से ये यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। सेकेंड पार्ट ऑफ साइकिल में जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम्स इनटू प्ले, एंड दैट्स व्हाई देयर इज दिस एंडोमेट्रियल preparation of fertilization. This time the ovum is released, and when it is not fertilized, the endometrium is shedding off. तो जहां जहां ओव्यूलेशन में दिक्कत होती है या फिर रेगुलर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, उस टाइम पे हमें पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, कभी कभार डिले हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल या मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आना मतलब एक लड़की का मैचुरेशन बिगिन होना या शुरुआत होना। एडोलसेंट फेज में जब 12 इयर्स पे या फिर 14 इयर्स पे उसे पीरियड आते हैं, तो ये पीरियड्स पहले ओव्यूलेशन इज नॉट रेगुलर, हर बार हर महीने में एग रिलीज नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसका यूट्रस एंड एंटायर बॉडी इज गेटिंग मच्योर्ड, एंड उसका एक पूरा ग्रोथ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इज कंप्लीट बाय 21 इयर्स ऑफ एज। उस टाइम तक उसे पीरियड्स थोड़े आगे पीछे महीने या 2 महीने में आना एक नेचुरल फिनोमिनन है। इसके लिए कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल में दिक्कत है या फिर वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव वेट गेन कर रहे हैं, या फिर उन्हें कोई हार्मोनल चेंजेस लाइक एक्ने, एक्सेसिव पिंपल्स आ जाना, या फिर एक्सेसिव उन्हें फेशियल हेयर ग्रोथ दिखना, इन सब के बाद दे शुड कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट फॉर हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो नॉर्मल क्या है कि 12 to 14 ईयर्स पे पीरियड आना, और उनका जाना दैट इज मेनोपॉज, दैट इज बाय 45 to 49 ईयर्स ऑफ एज। नॉर्मल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 21 डेज टू 45 डेज, मतलब 21 डेज एंड 1.5 महीने तक, 15 दिन आगे पीछे जो हम बोलते हैं कि 30 डेज मतलब एग्जैक्ट सेम डे पे पीरियड आना जरूरी नहीं है। कभी कभार उनका आगे पीछे होना इज ऑल्सो नॉर्मल। ब्लड फ्लो अगर 7 दिन तक है, थोड़ा बहुत जा रहा है, पहले 2-3 दिन, जनरली 2-3 दिन हैवी होता है, राइट, और फिर थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो जाता है। तो ये कम फ्लो कभी कभार 7 डेज तक खत्म हो जाता है, लाइक स्पॉटिंग स्पॉटिंग होना, एंड देन इट इज गॉन। तो दिस इज नॉर्मल। बट इफ इट इज लेस देन 2 डेज एंड इफ इट इज मोर देन 7 डेज, पासिंग ऑफ क्लॉट्स, बहुत ज्यादा पैड लगना, आप काम नहीं कर पा रहे हो, इतना पेन आपको हो रहा है कि आप स्कूल मिस कर रहे हो, कॉलेज मिस कर रहे हो, आप वर्क प्लेस पे नहीं जा पा रहे हो, सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट दे फेस। दिस इज नॉट नॉर्मल पीरियड्स। सो नॉर्मल पीरियड इज सेकेंड of average. Am I audible? Yes, There you was a are. break. There was a Between. break in voice. Yeah. Voice is breaking right now. Is it okay? Yeah. Now it's okay. Yeah. Now it's okay. 93% of girls they miss school because of period problem. So out of which 74% they have pain or discomfort, 38% they fear of staining clothes, 13% उन्हें embarrassment होती है। So these are UNICEF stats, and we want to make them aware about these changes. These are normal changes, but if they have such problems which are abnormal periods, they should consult. A woman has approximate 420 periods in their lifetime.
So cumulatively we bleed for 7 years of 40 years, जो हमारा reproductive cycle है. Then what should we use? What do we use during periods? हम क्या क्या यूज करते हैं? जैसे napkins है, tampons है, cloth pads है, and menstrual cups है. तो जो भी हमारे सैनिटरी पैड्स है, पहले के जमाने में क्लॉथ यूज किया जाता था, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा, और अभी हम सबको पता है कि क्लॉथ यूज नहीं करना चाहिए. देन कमिंग टू हमारा जो विस्पर या फिर स्टे फ्री जो हमारे पैड्स आते हैं, सैनिटरी पैड्स विच आर नॉट यूजेबल, नॉन रीयूजेबल, हम उसको बार बार यूज नहीं कर सकते. बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं कि सैनिटरी पैड से क्या होता है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको मेडिकल स्टोर्स में मिल जाएगा, आपको कहीं भी स्टेशनरी में मिल जाएगा, और इसका कॉस्ट भी पर पैड बहुत ज्यादा नहीं है, तो एवरीबडी कैन यूज इट नाउ. बट ये डिस्पोजेबल नहीं है, क्योंकि बाद में दिस इज कॉजिंग अ वेस्ट, अ लॉट ऑफ वेस्ट प्रॉब्लम. इसे डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है. अगर आप कहीं वेस्ट वेस्ट बिन में डाल रहे हो, उसको प्रॉपरली रैप करके वेस्ट बिन में डालना पड़ेगा, लेकिन ये इजीली अवेलेबल है. इसके डिसएडवांटेजेस कुछ होते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक कोटिंग इट हैज, देर आर केमिकल्स ओवर इट, सेंटेड प्रोडक्ट्स इसमें यूज किए जाते हैं कि उसमें स्मेल ना आए, तो दैट टाइम देर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ रैशेस, बर्न होता है, इचिंग होता है, कांट बी रीयूज, एंड डिस्पोजल इज डिफिकल्ट, एंड इट इज एनवायरमेंटल वेस्ट टू. कमिंग टू क्लॉथ पैड्स, जैसे आज रीयूजेबल डाइपर्स आपने सुना होगा, अगर बच्चों के लिए भी हम डाइपर्स होते हैं जिसमें वॉशेबल इंसर्ट्स होते हैं, उसी तरह के क्लॉथ पैड्स आए हैं. सो दीज आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट कॉटन. दे आर डिवॉइड ऑफ एनी इरिटेंट प्रोडक्ट और मटेरियल्स और केमिकल्स. दे कैन बी वॉश, उसे वॉश किया जा सकता है. आप ठंडे पानी में सोक करके रखो थोड़ी देर, उसके बाद उसे वॉश कर लो एंड उसको सन ड्राई करो, देन यू कैन रीयूज इट. एक पैड अराउंड 5 ml ऑफ ब्लड सोक करता है, एंड दे कैन बी वॉर्न विथ पीरियड पैंटीज, लाइक ट्रिपल लेयर पैंट. उसमें इंसर्ट्स आते हैं एंड उसमें ट्रिपल लेयर होता है, तो 2 लेयर के बीच में आपको इसको इंसर्ट करना है, एंड इसे प्रेस बटन होती है, तो प्रेस बटन से आप उसको सेफली सिक्योर कर सकते हैं. जो यंग गर्ल्स है वो यूज नहीं करना चाहती, कुछ कुछ मदर्स उन्हें डायपर पहना देते हैं, कुछ मदर्स उन्हें प्लास्टिक का पैड जो है वो मिसप्लेस हो सकता है, स्टेन का डर लगता है, तो उस टाइम पे दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन बिकॉज इट इज स्किन फ्रेंडली. एंड इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अराउंड 200 to 600 जाता है फॉर पैक ऑफ 5, एंड इट लास्ट फॉर 2 to 4 years. सो यू कैन यूज वंस इट इज परचेज, यू कैन यूज इट फॉर 2 to 4 years. दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन इफ, क्योंकि इससे वो स्मेल वाला प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स नहीं है, आप वॉश कर रहे हो, सन ड्राई कर रहे हो, यू फील गुड, बिकॉज सन ड्राई करने से उसे नॉर्मल क्लॉथ वाला फील आ जाता है. दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज पैड्स. जैसे ये फोटोज है कुछ, इनमें फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी कि देर इज इंसर्ट एंड इट हैज प्रेस बटन्स टू, तो इस तरह यूज कर सकते हैं. So washing cloth pad is not difficult. Like I told that you can soak it in cold water for at least 30 minutes, not in hot water because it will disintegrate that pad. Scrub softly with hands and with mild detergent and dry in sunlight. So this is so easy. Then coming to menstrual cup. So before coming to menstrual cup, I will suggest that if you are using a normal sanitary pad, which is easily available in market, remember to change it every 3 to 4 hours. So even if it is not so, you have to change it because there is a problem of also toxins releasing, toxic shock syndrome, infection, irritation, and rash, which will be more if you are not changing it frequently. And same is with cloth pads too, because menstrual blood is a very good culture medium for bacteria, and bacterial growth will be there. तो आपको अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना है, तो 3 से 4 घंटे में हमें चेंज करना चाहिए. कमिंग टू मेंस्ट्रुअल कप, दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट विच आई मस्ट से कि सो आई विल प्ले दिस वीडियो फॉर यू.
Ma'am, share it with the sound. Okay, okay. Yeah. So It's once not we with stop sound. share, no. Once we stop share, again start sharing the screen. There will be a Okay, bottom share with the sound. There will be the option. okay, okay, okay. Else I'll tell this all in a nutshell. Mm. I'll just completely. So this is a bell-shaped device. If you can see, it's a bell-shaped medical grade silicone device for collecting a menstrual blood. तो ये एक device है which is bell shape you can see and it has three sizes. One is small, medium and large. तो ये तीन sizes में आता है. Around 10 to 25 ml blood इसमें accumulate हो सकता है. इसका अगर रिम आप देखेंगे एंड एक कोन देखेंगे, जो रिम है दैट फिट्स और रिकॉइल्स इनसाइड दी वजाइना. तो ये रिकॉइल हो जाता है तो ये लीक प्रूफ सील फॉर्म करता है. देन यहाँ पे जो कोन है या फिर दिस इज अ टिप ऑफ मेंस्ट्रुअल कप, ये टिप से हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो अगर हम लास्ट वाले पिक्चर में देखेंगे तो वहां पे मेंस्ट्रुअल कप उन्होंने इंसर्ट करने के बाद हमारी बॉडी में कैसा पोजीशन लेता है वो दिखाया है. तो इसे कुछ एक हम होल्ड से अंदर इंसर्ट कर सकते हैं. So, देर आर थ्री डिफरेंट, जिससे हम सी शेप होल्ड, जिसको प्रेस करके हम सी शेप बनाते हैं. देर इज सेवन शेप होल्ड एंड इससे हम पिंच करके, सो वी नीड टू पिंच इट एंड वी कैन इंसर्ट इट बाय स्क्वाटिंग. जैसे इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं या फिर हम नीचे बैठते हैं स्क्वाट करते हैं या फिर लेटे लेटे ऑल्सो यू कैन इंसर्ट इट. या फिर वॉशरूम में अगर आप कमोड पे एक पैर रख के एक पैर नीचे रख के ऑल्सो यू कैन इंसर्ट इट बिकॉज दैट इज easier way to insert it. इसे कलेक्ट अगर आपको यहाँ पे जैसे थर्ड पिक्चर में दिखाया है कि दिस इज ब्लड इज गेटिंग कलेक्टेड, तो क्या ये लीक होता है? मतलब एवरी टाइम हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा? फर्स्ट और सेकंड डे जब हमारा फ्लो ज्यादा होता है या फिर क्लॉट्स हमें पास होते हैं, उस टाइम पे चांसेस है अगर लीक हो सकता है. लेकिन इस टाइम पे हम बार बार हमें निकाल के उसको रीइंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जितना इसकी कैपेसिटी है, so it can hold blood for a longer period of time. Then second is how to, so these are the holes which are explained in the next picture: C-shaped hole, punch down hole and a pinch hole, that is a 7-shaped hole. So there is no need of removing this while passing urine or while passing stool. आप इसे पहन के स्विमिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, आपका लीक नहीं होगा, स्टेन नहीं होगा. Then it is not affected by rain or wet clothes. Cleaning is very easy. आप इसे simple soap and water से wash करके आप reinsert कर सकते हैं. आज इसकी कॉस्ट काफी कम है, 300 to 400, एंड ये चलता है 7 to 8 years तक. एंड इट सेव्स लॉट ऑफ मनी. डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई वेस्ट मटेरियल इससे फॉर्म नहीं हो रहा है. आप अगर कहीं पे भी वॉशरूम के लिए जा रहे हैं वहां पे उसे एम्प्टी कर दीजिए, उसे वॉश कर लीजिए एंड री इंसर्ट कर लीजिए. सो दैट इज सो इजी. यू हैव टू कैरी जस्ट योर कप एवरी टाइम. अगर 3 से 4 दिन आपका यूज हो जाए उसके बाद उसे वॉश करो, एक बॉइलिंग वाटर से क्लीन करो एंड अपने पर्स में आप रख लो. दैट इज सो कन्वीनियंट. तो अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो क्लॉथ पैड देखिए 245 रुपीज एंड सैनिटरी पैड इज जस्ट कॉस्टिंग 8 रुपीज. बट इसे जो हमें लग रहा है कि एवरी पैड अगर क्यूमुलेटिव हम देखें तो हमें बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है. लेकिन मेंस्ट्रुअल कप का यहाँ पे जो 1000 लिखा है, दिस इज द ओल्ड स्लाइड, बट नाउ द कॉस्ट इज जस्ट 300 to 400 रुपीज एंड हमें ये चलता है 7 to 10 years. सो दिस इज सो गुड कि हम मेंस्ट्रुअल कप को इतना आसानी से यूज कर सकते. कभी कभी अगर आप 12 आवर्स तक भी, 12 घंटे तक भी इसे आराम से रख सकते हो बिकॉज दिस इज मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन. इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, पैड रैश नहीं होगा, आपको बार बार इचिंग एंड जो पीरियड के बाद की इरिटेशन होती है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ेगा. तो हाउ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. सो कमिंग टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगेन, आप कुछ कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट जब यूज करते हैं, वॉश योर हैंड्स. हैंड वॉश करके उस मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को यूज करें, चेंज करें रेगुलरली. जो लोएस्ट एब्सॉर्बेंसी प्रोडक्ट है उसे यूज करना जरूरी है सो दैट उसकी एब्सॉर्बेंसी अच्छी रहेगी. लॉन्ग वेयर, नाइट वेयर पैड्स,
लॉन्ग ड्यूरेशन पैड्स सही नहीं है। देन डिस्कार्ड यूज्ड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स प्रॉपरली इन अ बिन, वेयर अ ब्रेदेबल क्लोथिंग, आप कॉटन का पहनो, आप मतलब इजीली एयरी क्लोथ्स पहनो, बहुत ज्यादा स्वेटी नहीं होना चाहिए। कीप योर जेनाइटल एरिया क्लीन, satin underwears or synthetic underwears should not be used. Use unscented hygiene products. So how do you clean yourself during periods? Shower लीजिए आप, माइल्ड सोप एंड माइल्ड बॉडी वॉश से भी आप आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को क्लीन कर सकते हैं। यू डू नॉट नीड टू यूज एनी स्पेशल सोप और हाइजीन वॉश। वी वॉश यूज करना है क्या? नहीं, आपको कोई भी हाइजीन वॉश यूज करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म से हम सोप एंड वाटर यूज कर सकते हैं एंड वो इनफ है। यू डोंट नीड एनी स्पेशल सोप और hygiene wash there. Then you should never clean inside your vagina. या फिर douche लेना, ये सब चीजें रिकमेंडेड नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं, नॉट इवन फॉर वाइट डिस्चार्ज। menstrual irregularities क्या है? So menstrual irregularities are like कि हमें पेन होता है, पीरियड के टाइम पे पेन होना, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जाना, बार बार पीरियड के बीमार पड़ गए थे, हमें बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है या वेट गेन किया है, हमें कोई इन्फेक्शन हो गया है यूट्रस के, उसके अराउंड कोई फाइब्रॉइड हो गया है, कुछ सिस्ट हो गई है ओवरीज में, इन सब चीजों से पीरियड्स में प्रॉब्लम हो सकती है। Coming to second topic of ours, that is cervical cancer. अगर हम यूट्रस को देखें तो यूट्रस का जो माउथ होता है, हमें वाइट डिस्चार्ज जो एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव, इट इज जस्ट बिफोर पीरियड्स लोगों को होती होगी ये प्रॉब्लम एकदम। कभी भी अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, आपको बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी पैंटी स्टेन हो रही है, उसमें फाउल स्मेलिंग है, उससे इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज अगर आपको हो रहा है तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक वाइट डिस्चार्ज है और पैथोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज, जिसके लिए आपको कंसल्ट करना एंड ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर, इसमें इसे क्यों, इसके रिस्क फैक्टर्स किसे किसे हो सकता है या फिर क्या प्रॉब्लम्स है जिसको हम आज अवॉइड करें तो हमें आगे जाके सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअली एक्टिव यंग गर्ल्स, नाउअडेज गर्ल्स आर बिकमिंग एक्टिव एट अर्लियर एज, तो उनका सेक्सुअली एक्टिव एट अर्लियर एज एंड नॉट एंड गेटिंग इन्फेक्टेड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। Then having multiple sexual partners is a risk. Poor genital hygiene is a risk. Smoking, multiple pregnancies, weak immune system, if they are having oral contraceptive pills but not using barrier contraception, that is condoms use na karna is a risk factor. Condom use karna is a protection for cervical cancer. Early marriage and late menopause, so that is again a रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। हम कैसे पता करें कि हम रिस्क में है या फिर हमें प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट नॉर्मल? तो वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कुछ स्पॉटिंग होना या थोड़ा सा खून दिखना नॉर्मल नहीं है, टेस्ट कर लीजिए। ब्लीडिंग आफ्टर पेल्विक एग्जामिनेशन, जैसे हम आप चेकअप कर रहे हैं आपका और उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग है या फिर सर्विक्स पे कोई लीजन है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, that is again a cause. Foul smelling or odorous discharge, white discharge, pain during sexual intercourse, back pain होना, leg pain होना, sudden weight loss, एक ही पैर का सूजन,
ये सारे सिम्टम्स सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई आइसोलेटेड सिम्टम है, आपको सिर्फ स्वेलिंग है वन लेग पे, तो आप ये मत सोचिए कि आपको हर बार सर्वाइकल कैंसर है, बट इसके कुछ कारणों में ये भी एक कारण है। हम इसे प्रिवेंट कैसे करें? तो हमें सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए, जैसे कॉन्डम यूज करना चाहिए, सेक्सुअल पार्टनर्स को लिमिट करना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वी शुड अवॉइड, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद जेनाइटल वॉर्ड्स। वॉर्ड्स ये मस्से जैसे लीजन आपके जेनाइटल पार्ट्स पे, प्राइवेट पार्ट्स पे आने के लिए उसे ही जेनाइटल वॉर्ड्स कहा जाता है। इसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो लोग मेंटेन नहीं करते, उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही लोग सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्क उनके लिए बनते हैं। HPV vaccination, we have this vaccination available now, and you can use it to prevent cervical cancer. Screening and testing for precancerous lesion like pap smear and HPV DNA co-testing, इसके बारे में मैं आपको आगे बता रही हूँ। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर इज सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन। Every 5 minutes, nearly one patient is losing their life due to HPV related cancer. 1 out of 13 cancers reported in India are HPV related. मतलब ये वायरस से बहुत लोगों को कैंसर्स हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर करेगा, इसके साथ साथ ये वल्वा, वजाइना, पेनिस, एनल, जेनाइटल एरिया के कैंसर्स कॉमनली कॉज करता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से अगर हम खुद को इम्यून करेंगे, मतलब वैक्सीनेशन देंगे, तो हमें आगे जाके ये कैंसर से हम खुद को बचा सकते हैं। So over 80% of men and women can be exposed to HPV infections in their life. So even if they are not at risk, they are infected by HPV virus. So single choice you make now will be significantly lowering your child's risk for HPV related cancers in future. तो आज अगर हम वैक्सीनेशन दे, तो हम इसे 90% तक सर्वाइकल कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं। So HPV vaccination can help prevent nearly 90% of cervical cancer cases, as well as it will reduce burden of vulvar and vagina. As I told, genital cancers, anal warts, and all the other cancers caused by HPV virus. Children and teen who receive HPV vaccine before HPV exposure, so when it is mostly effective before 15 years of age, because 9 to 15 years is a window when we can give 2 doses of HPV vaccine, and this is for both male and female. मतलब लड़कों के लिए भी ये वैक्सीन है and लड़कियों के लिए भी ये वैक्सीन है। So 9-15 years में जब उन्हें HPV इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, उस टाइम पे इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है एंड वैक्सीन की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। So HPV vaccine is now recommended for girls between 9 to 15 years by IAP, World Health Organization, and CDC2. तो what are the vaccines which are available in India? एक है nanovalent, which is for 9 virus strains. So this nanovalent vaccine is expected to prevent 98% of cervical cancers. Then there is the cost of nanovalent vaccine is around 10,000 per dose. Quadrivalent HPV vaccine, which is for 83% cervical cancer, it will prevent, and that is for around 4 to 5,000 per dose. This is for Gardasil. ये पुराने थे, मतलब इंडिया में या फिर इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन आर गार्डासिल 9 एंड क्वाड्रिवेलेंट गार्डासिल वैक्सीन. Then as I told that early HPV vaccination is better, but ऐसा नहीं है कि आगे जाके आफ्टर 15 years ये हेल्प नहीं करता, जबकि हम HPV वैक्सीन अब आपको बोलते हैं, रेकमेंड करते हैं कि 9 to 26 years में इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स है. After 26 years till 45 years of age, we can give HPV vaccine too. But along with that, if patient is already infected, it is not going to cure HPV virus infection.
So it cannot treat HPV infection, but it can prevent. So these are the two vaccinations which were available, that is Gardasil 9 and Cervarix. Now we have a Cervavac vaccine is available. ये अगर मैं इसे compare करूँ, if you can see this table, Cervarix जो था वो सिर्फ 2 स्ट्रेन के लिए इफेक्टिव था. गार्डासिल 4 आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड कॉलम में, ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को दे सकते हैं. ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, इसके ये 4 स्ट्रेंथ के लिए था, बट मेनली वी हैव यूज्ड इट फॉर फीमेल्स ओनली. Gardasil 9 we recommend for male and females. It has 9 strengths and it is तो ये हमें पहले अवेलेबल ऑप्शन था जो हम मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए यूज कर सकते थे. इसका 2 डोजेस लगते थे 9 to 14 years एंड अभी भी दिस इज अवेलेबल एंड एज 15 to 26 में इसके 3 डोजेस लगते हैं. The new is Cervavac vaccine which is manufactured, which is in India. It is quadrivalent. इसमें 4 strains का coverage है. It is for both male and females. This is very affordable. It is just costing around 2000 rupees. And इसके 2 doses लगेंगे 9 to 14 years में, 0 and 6 month apart. 15 to 26 years में इसके 3 doses लगेंगे. So this is again 0, 2 and 6 months. सर्वाइकल कैंसर जिन्हें पहले टाइम पे वैक्सीन नहीं मिला, फिर राइट नाउ दे आर इन बिटवीन एज ऑफ 35 to 45 years और 50 years, व्हाट शुड दे डू? उन्हें कैसे स्क्रीन किया जाए कि आपको एचपीवी वायरस या फिर कैंसर होने के क्या चांसेस है, या एचपीवी वायरस से आपका इन्फेक्शन हुआ है या नहीं? तो इन्हें हम स्क्रीन करते हैं पैप्समियर टेस्टिंग से. तो पैप्समियर का को टेस्टिंग होता है. So we do pap smear co-testing, that is liquid based cytology, and along with that we test them for HPV DNA. ये टेस्ट एकदम 5 मिनट to 10 minutes प्रोसीजर है. आप गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में आपका इस तरह से एक चेकअप होता है जिसमें एक ब्रश होता है एंड दैट वी टेक अ साइटोलॉजी फ्रॉम सर्विक्स. सो दिस इज जस्ट अ 5-minute प्रोसीजर एंड यू हैव टू डू इट. अगर 21 साल से 29 साल के एज में है, जैसे 26 साल तक हमारे पास तो वैक्सीन है ही, दैट वी कैन प्रिवेंट इट सर्वाइकल कैंसर, बट आफ्टर दैट every 3 yearly and after 30 years every 5 yearly we have to undergo a co-testing. So those who are not vaccinated, don't aim just for a vaccine but get yourself tested for HPV DNA plus pap smear. तो because after this examination we get to know whether there is कोई इरोजन है, कोई घाव है, या कोई पॉलिप है, या कुछ और पैथोलॉजी है on your cervix, we can just detect it. So my take home message for this is menstruation is a normal phenomenon. You can discuss with your parents, those young girls who are, they can also discuss with their gynecologist or their family doctor about periods. They can even discuss with their mothers. And अगर आपको कुछ problem है, then you should discuss it with doctor. जो cycles 21 days to 45 days की है, this is again a normal cycle. You don't have to worry about it कि इसका duration एकदम date to date आना चाहिए. 7 days से ज्यादा bleeding है तो आपको bleeding ज्यादा है. Menstrual hygiene important है because it will prevent infection as well as cancers. Wash regularly with normal soap or with and water. Twice a day wash is recommended. Menstrual cup is new age, safe, sustainable menstrual product. I promote using it. Cervical cancer is a disease that can be prevented by avoiding risk factors. जो risk factors हमने discuss किए उसे avoid करो, and HPV vaccination you can go for it. Early detection followed by treatment of precancerous lesion. Like अगर कोई excessive white discharge है, बहुत टाइम की ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, या हमें इन बिटवीन पीरियड में ब्लीडिंग हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, consult and check yourself for precancerous lesion. All women who are aged 30 years and more should be screened for cervical cancer by pap smear. Thank you. थैंक यू डॉक्टर मुग्धा मैम. इतना Thank you. अच्छा हमें एकदम सिंपल भाषा में हमें इतने अच्छे से सब बताया
menstrual hygiene and HPV vaccination and कैसे care लेना है, all the tests that you explained so nicely. So thanks so much. Uh, Thank you for sharing your knowledge and enlightening us on such a crucial health perspective for women. Now, I would like to invite Dr. Anju Mehrotra Kadu, who is a head at the Department of Pediatrics at Lata Mangeshkar Hospital, Nagpur. She is also the Secretary of the Hemophilia Society of Nagpur. I request you, ma'am, to please take up the question and answer session. Thank you, Indira ma'am. At the outset, I'd like to thank and congratulate both our A speakers for the wonderful talks. So with this, Prachi ma'am, are you here? Yes, I am. I just shifted from laptop to mobile, but ma'am. I'm here. Yeah. Ma'am, I think सारा technical things and वो सारे awareness करना was very important. But there are few quick just sum up that I would like to have with you. When I first and foremost, madam, just quick signs, 3-4 signs जो हमने patient ने देखने चाहिए. Yeah. Signs and जैसे मैं- symptoms. 1, 2, 3, 4. Yes, ma'am. Yeah. So any change in size and shape of the breast, Right, ma'am. any lump which is felt, Okay. any discoloration or any discharge coming from the nipple, and any itching or severe ulcer or wound over the nipple areolar area. So these are the things which one should be careful about. Yes, ma'am. Second point about self breast examination. How frequently it should be done? Monthly or day or weekly or 10 days? I mean, Every 15 days. Every 15 days. Yeah, and in women who are still menstruating, it is better to do it after the periods are over. Yes, ma'am. बेस्ट टाइम जो मैम मैमोग्राफी और आपने अल्ट्रासोनो मैमोग्राफी के बारे में जो बात किया वो which age, after which age and after how many days of cycle, ma'am? Yeah, as I said, after 35 years of age, ma'am. It should be done as a screening procedure, and your high risk once in 3 years is sufficient for people who do not have any significant family history of breast cancer. अगर breast cancer की family history बहुत significant है, first degree relative like mother या बुआ या मौसी, तो once in that, then annual mammography is indicated every year. So if we have a family history, madam, you want that we have to be more aggressive. हमने अच्छा ध्यान देना है और हमने yearly screening करनी है. Yes, that is correct. Yes. So, ma'am, there was a question in the chat box as well from Satyashri, madam. She just wanted to know the same. Ki how, if you have a family member who has a breast cancer, how frequently they have to go for the screening? I hope that answers the question. Once a year, and especially first degree relatives. We don't, क्योंकि extended family में बहुत सारे होते हैं. First degree are sister, mother, बुआ या मौसी, या नानी और दादी. Yes. So, unka question, madam, ye tha, when a daughter is having breast cancer and in the same family when son gets married and planning for a child, should they go? Should they undergo screening, or when should they go for screening? Now this is not it is not a very rampant cancer that it is spread genetically like this, unless there are families. If there is a family of 3-4 sisters और सबको अगर है, तो ऐसी families में screening करना चाहिए by the women members only. और अगर ऐसा है तो जो index patient होता है उनका BRCA किया जाता है usually. So everybody in the family does not need that investigation. अगर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनमें से जो फर्स्ट पेशेंट है उनमें अगर ब्राका आता है, तो फिर स्क्रीनिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट, नॉट अदरवाइज. ओके मैम. तो द थिंग इज कि अगर जो है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है तो ही हमने इतना एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग करना चाहिए. दैट्स व्हाट मैडम यू वांट टू से. इज इट करेक्ट मैम? इट इज करेक्ट. स्क्रीनिंग इन द सेंस जेनेटिक स्क्रीनिंग. जो मैमोग्राफी स्क्रीनिंग है वो तो हर साल करना चाहिए. राइट. अच्छा मैम, फ्यू मिथ्स रहते हैं, जैसे उसके में वन वर्ड है, साइज ऑफ ब्रेस्ट मैडम विद ब्रेस्ट कैंसर. सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. साइज ऑफ ब्रेस्ट with the breast cancer, any relation, ma'am? No.
No, it can occur Okay. in breast of any size. Any disadvantage of clothing or any type of clothing जिससे कैंसर होता है? नो नो नो, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे इतने सारे ऐसे मैसेजेस घूमते रहते हैं, ब्लैक ब्रा नहीं पहनना चाहिए, वायर्ड ब्रा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लोथिंग इज नॉट रिलेटेड बिकॉज इट इज बेसिकली एन इंटरनल जेनेटिक मैटर। ओके मैम, वन मोर मैम, थोड़े 3 and 4 मॉडिफाइबल फैक्टर्स रहते हैं जो मैडम ब्रेस्ट कैंसर आगे फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, कैन वी हियर इट फ्रॉम यू मैम? Yeah, so the most important is having an active lifestyle, exercise, maintenance of normal weight, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग encourage करना चाहिए न्यू मदर्स में। एंड इट इज बेटर टू हैव children at an earlier age group, क्योंकि आजकल we see that women get married very late and they start a family very very late, so the chances of breast cancer are high in such cases. So wherever possible, it is important to have childbearing early. Ma'am, what about oral contraceptive pills and breast cancer, ma'am? They are known to have an association, but it is one of the factors, and especially in only in hormone dependent factors. Hormone dependent मतलब receptor positive ER/PR जो tumors हैं, उनमें वो direct association. So ma'am, we can break the chain by giving it for short duration if I'm Yes, correct. yes, yes. Yes. It is not a contraindication. ये देना नहीं चाहिए और इससे पक्का होगा ही, ऐसा नहीं है. Inclusive evidence is not there. मैम, यू टॉक्ड अबाउट कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरीज, तो मैडम ये इसके साथ में भी बहुत सारे मिथ्स हैं कि वो जो हम इम्प्लांट्स डालते हैं उनसे भी कैंसर हो सकता है या फिर से रिकरेंस हो सकता है। वन वर्ड अबाउट दैट मैम। Yeah, see, breast conservation surgery is not implant surgery. Implants are not used in breast conservation. Breast conservation, जो मैंने breast conservation और oncoplasty बताया, that is use of the patient's own tissues. It is not an external implant. External implants are very, very rarely used in cases of mastectomy. और for non-cancerous cosmetic reasons, so cosmetically सिर्फ size बढ़ाने के लिए करना है, तो it is not advised. So there's one last question by Satyashri madam कि अगर dye हम inject कर रहे हैं into the lymph nodes, will that lead to other cancerous areas? I think No, that's what no, you no. want to know. No, no, no. What we commonly use is methylene blue, which is a very inert substance, and it gets excreted in the urine within 4 to 6 hours. So, वो एक है, और दूसरा रेडियो आइसोटोप जो डाई दिया जाता है टेक्नीशियम 99M, that also gets washed out through the kidneys very quickly within a few hours itself. So one word about diet, madam. What kind of diet we should avoid so that we don't get predisposed to breast cancer? Yes, yes, this is very relevant because we should have fresh food and we should avoid preserved food, and we should have more natural food rather than आजकल के जो genetically modified या preserved या artificial flavorings वगैरह वाले food stuffs है उससे. Right, ma'am. Thank you so much. The most important Thank I you. wanted to highlight was 4 modifiable things that we have to do is weight reduction. मैडम obesity के बारे में बोल रहे थे, और अपना खाना पीना जो बाहर का खाना है वो fresh fruits, fresh vegetables, they do really prevent healthy eating habits. और pregnancy late थोड़ा सा avoid करना है, that is also predisposing factor. And of course breastfeeding, which is the most important preventive factors for breast cancer. Ma'am, Perfect. yeah, would you like to add something before we switch off this question and I answer think for that is questions? it. You have summed it up so well that the message, I think, should be very well taken. Anybody, any other questions is in the chat box if I missed out or in the live? Yes, Anupama has a question. Yes, ma'am. Yes, yes. Is it there down there, madam, in the chat box? Yes, it is there in the chat box. Any relation of food and today's lifestyle with breast cancer? I think we've addressed. Yes, that has been covered. Yeah, she's talked about pap smear, madam. That will be answered by Mugdha, madam. Yeah, yeah. I think all breast cancer questions have been taken up. Right. Thank you so much. Thank you. Ma'am, I had one question here. I had put it in the chat box. Like you Okay. had mentioned about the breastfeeding, right? So Right. what would best duration
so that we can avoid this breast cancer? Because we all are working women, there will be some Right. constraints and all, so that we need not have to worry about it. Yeah. So basically, it is not the duration of breastfeeding. It is mainly whether breastfeeding has been done or not. It is okay even if the feeding is carried out for 5 to 6 months also. The natural function of the breast is lactation, right? So Yeah. all the nature here, if we do anything against nature, then nature always shows its significance or importance. So if the natural function is kept, is preserved, it is known to have a protective effect against breast cancer. So the duration does not matter. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. And as a pediatrician, we recommend breastfeeding up to 2 years. It has nothing to do Right. with the association of breast cancer. Yeah, that's correct. Um, so maybe move ahead with the questions about menstrual hygiene and cervical cancer. Mugdha madam, so you beautifully explained us the importance of maintaining our hygiene during menstruation and what it is all about. So, and that is a good news is that that is only one cancer which is 100% preventable, and that is by the vaccine. So we have lot many myths about HPV vaccine. So first I would take up the questions which are there in the chat box. Yes. So first Saptashri madam had put one question कि बार-बार pap smear करना risky नहीं है क्या? नहीं, पैप्समेयर आपको 3 to 5 ईयरली कर लेना चाहिए। एंड इसे हम एग्जामिनेशन भी करते हैं, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो हम बच्चे होने के बाद भूल जाते हैं कि हमें एग्जामिनेशन करवाना है या फिर रेगुलर चेकअप करवाना है। तो पैप्समेयर इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर चेकअप, एंड ये 2 से 3 साल में तो डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए। इट्स नॉट रिस्की। Yeah. Anupma madam also have asked regarding same thing. Pap smear, is it safe in women with bleeding disorder? Madam has a question here. Yes, it should be done carefully and it is safe. Second, madam, आपके लिए question है regarding menstrual cup. Hmm. So, ma'am, when we are at work, how can we sterilize that menstrual cup? Or रोज is it? स्टेरलाइज, हाँ। And second part है उनका question का menstrual cup, you getting giddiness is common or should we bother about it? Do we get giddiness with the menstrual cup? नो नो नो, नॉट एट ऑल। गिडीनेस तो नहीं होता है। इनफैक्ट इसे वर्क प्लेस पे भी आपको स्टेरलाइज करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला 3 से 4 दिन के यूज के बाद आप आराम से इसको कभी भी बॉईल करके स्टेरलाइज कर सकते हैं। जब आप वर्क प्लेस पे हो उसे नॉर्मल सोप एंड वाटर से वॉश करो, एम्प्टी करो एंड उसे इंसर्ट करो। Okay. दैट्स इट। Somebody is asked, is it safe to delay menstruation? नो इट इज नॉट, बिकॉज हमारा एक ड्यूरेशन नॉर्मल सेट है। अगर ये 28 डेज का साइकिल जब हमें इसे बोल रहे हैं, इट्स लाइक अ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लास्ट मंथ में आपका तबीयत खराब थी, आपको ज्यादा स्ट्रेस था काम का, या फिर आपने वेट लूज किया, सडनली कोई न्यू डाइट, न्यू एक्सरसाइज रिजीम स्टार्ट की, तो आपके पीरियड्स पे इसका इफेक्ट आएगा। सो हॉर्मोन्स आर दैट सेंसिटिव, और अगर आप इस सेंसिटिव चीज को डिले करते हैं तो आगे जाके आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस होते हैं। सो शुड नॉट बी डिलेड। So उनका ये कहना था कि the first thing that I wanted to know was ये जो menstrual cup के बारे में आप बोल रहे हैं, इसकी availability is it all pharmaceutical shop में रहती है क्या? डेफिनेटली Amazon, मिंत्रा पे भी अवेलेबल है। Okay. Am I missing out, Indra madam, any question? I think you covered everything. Then I'll start with my FAQs. Yes. So as we have already talked about, मैडम ने सबके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया है when to refer to a doctor. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्लीडिंग विमेन में है कि हमने समझना चाहिए कि what is normal and what is abnormal for us. So that also madam has beautifully explained, और हम वैसे ही सब लोग अवेयर हैं कि that we have a score for bleeding in women. So that is there. बट हम यहाँ पे प्रिवेंशन पे ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि एक कैंसर है जो 100% प्रिवेंटेबल है, एंड अपने पास हैंडी सेफ वैक्सीन है
और इसके बारे में मिथ्स के बारे में बात करें, क्योंकि वी आर गोइंग टू गेट दिस वैक्सीन इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल वुमेन शुड बी अवेयर और उन्हें अपने आप को वैक्सीनेट करना चाहिए। सो पहले तो हम ये पूछे, ये जो HPV इन्फेक्शन है मैडम, क्या ये प्रेगनेंसी के थ्रू फैल सकता है क्या? प्रेगनेंसी के थ्रू भी फैलता है, एंड इनफैक्ट इफ मदर इज इन्फेक्टेड उसके बेबी को होने के चांसेस हो जाते हैं। तो HPV इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ऑल्सो देयर। ओके, सो मतलब हमें ये अगर कुछ भी ऐसे अबनॉर्मल लेजन्स दिखते हैं तो हमें बहुत गार्ड पे रहना है और हमें आपको रेफर करना है। कोई भी ऐसे गांठ है, गांठें हैं, दाग है जैसे आपने बताया, या अबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ये सब में हमको आपको रेफर करना है। सो करेक्ट। वैक्सीन के बारे में मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या HPV तो क्या ऑलरेडी मैडम वायरस है, हम ऑलरेडी 2-3 वायरस बॉडी में डाल रहे हैं, क्या हम उससे कैंसर नहीं करेंगे बॉडी में? बिल्कुल नहीं, ये एक वैक्सीन का ही मैकेनिज्म होता है कि वैक्सीन मतलब हम उसे खुद को इम्यून बनाते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए इसे इन्फेक्शन होने से पहले अगर हम वैक्सीन देते हैं तो इसकी इफेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। अब हमें इन्फेक्शन होता कैसे है HPV का? होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, एंड सेक्सुअल कांटेक्ट इसीलिए होने से पहले हमें अगर वैक्सीन दिया तो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे हमने कोविड वैक्सीनेशन दिया था, इसका मतलब हमने कोविड वायरस अंदर नहीं डाला, इनफैक्ट हमने उसके लिए खुद की बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया। सो दिस रिस्पॉन्स इज बीइंग जनरेटेड बाय गिविंग अ वैक्सीन। तो फिर मैडम वो तो, लेकिन जिन लोग की शादी हो गई है ऑलरेडी, उनको एक बेबी हो गया है, तो फिर इसका मतलब वो वैक्सीन ले ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं वैक्सीन, उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। जैसे 90% या 98% प्रोटेक्शन जो मैंने बोला, वो जिन्हें इन्फेक्शन पहले हुआ नहीं है। तो जो मैरिड है या उन्हें बेबी है, वह हम अप टू 45 years ऑफ एज भी इस वैक्सीन को दे सकते हैं। उनमें रिस्पॉन्स विल बी अराउंड 70 to 80%। तो इसका मतलब मैडम पहले हमें स्क्रीन करना है उनको, फिर वैक्सीन देना है HPV के लिए, नो नो, इज दैट वी सो? कैन गिव वैक्सीन डायरेक्टली। वैक्सीन हम दे सकते हैं आफ्टर 15 years ऑफ एज टिल 45 years ऑफ एज। हमें 3 डोजेस देने हैं। तो ये 3 डोजेस मतलब 0, 2 month एंड 6 month। अगर हम जो 26 years के ऊपर है या जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली है, उन्हें हम पैप्समियर एंड HPV DNA को टेस्टिंग से 5-5 साल में स्क्रीन कर सकते हैं। तो मैडम अगर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और या हम ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, उस सिचुएशन में वैक्सीन ले सकते हैं क्या? प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद या लैक्टेशन फेज में या ब्रेस्ट फीडिंग फेज में हम इसे दे सकते हैं। राइट, तो मैडम क्या ये इनफर्टिलिटी नहीं करता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस इज अ वायरस, वी आर प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट सम वायरस, इट कैनॉट कॉज इनफर्टिलिटी। तो मैडम ये तो वायरस, जैसे कोविड में इतना बड़ा जो है गांठ आ जाती थी, यू हैज टू हैव लॉट्स ऑफ फीवर, देन विल बी गेटिंग लॉट ऑफ रिएक्शन टू दिस वैक्सीन एज वेल, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? द स्टडीज जो भी हुए हैं उनमें हमने देखा है कि ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स या फीवर इस तरह से नहीं होता है। बहुत रेयर कंडीशन में आपको वहां पे स्वेलिंग, जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहां पे स्वेलिंग या इचिंग या रेडनेस, जो एक नॉर्मल कोई भी वैक्सीन देने के बाद होती है, बस उतना ही होगा। और तो इसका कोई रिलेशन पीरियड से भी नहीं है, मतलब पीरियड के दौरान दे सकते हैं क्या, ये बहुत लोग पूछते हैं। हाँ बिल्कुल, आप पीरियड के दौरान भी दे सकते हैं। यस सर। सो अभी ये इसका सम अप करने के लिए कि हमने 2 कैंसर के बारे में बात किया है। पहला वाला कैंसर भी प्रिवेंटेबल है, मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जिन पे हम काम कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। स्क्रीनिंग करके अर्ली स्टेज में उनको ट्रीटेबल बना सकते हैं, ट्रीटेबल स्टेज पे रोक सकते हैं। Whereas cervical cancer way we have 100% proof that we can prevent that cancer by taking the doses. तो आप भी आज के वेबिनार के अंदर आई वुड वांट कि आप जा करके 4 या 5 लेडीज को और बताएंगे कि दैट दे कैन सेफगार्ड देमसेल्व्स फ्रॉम दिस dreaded cancer. So Mugdha madam, your closing remark or You have summed up everything, ma'am. any questions which we are missing out, madam? I think we have covered everything and we will be putting it on YouTube. So those who have missed the session, they can view it later on. And also you are live on YouTube. Thank you I very much, Dr. I request Upasna Sir. madam to ask everybody to switch on their videos for a photograph, please. Yeah, sure, ma'am.
Um, Thank you very much, Dr. Anju ma'am, Dr. Prachi ma'am, and Dr. Mugdha ma'am for addressing all the queries and explaining all the medical aspects to us in a very easy to understandable manner. Now, I would like to request um, Dr. Sunita Sharma ma'am, who is the Assistant Regional Coordinator, North Region, HFI, to deliver her vote of thanks. And after vote of thanks, ma'am, I will request everyone to switch on their camera for the photograph. Thank you, Vasya. Thank you so much for joining us. मैं हमारे स्पीकर्स डॉक्टर प्राची महाजन और डॉक्टर मुंता जी को थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने अपने इतना बिजी शेड्यूल होते हुए हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज हम सबके बीच शेयर की। साथ में प्रेसिडेंट आयुषी देशमुख को मैं थैंक्स बोलती हूँ, विशेष रूप से थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने HFI हमारे वुमेन के साथ एक इतने अच्छे वेबिनार साथ ही डॉक्टर अंजू मैडम जी इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड इस वेबिनार के लिए पहले और हमारी सारी क्वेरीज FAQ के माध्यम से पूरी की। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं मिस्टर प्रशांत जी, जो कि हेमोफीलिया सोसाइटी इसी मेंबर, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग का उन्होंने ध्यान रखा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अंत में मैं सभी पार्टिसिपेंट को हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने टिकट पर समय निकाला आपके साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वास्तव में मेरे नाम बहुत ही यूजफुल था, मैं सारे लेडीज में इसका यूज करा भेजने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। सभी लोग अपने कैमरे ऑन करें। Over to Percy. Yeah. Thank you so much, ma'am. With this, we have come to the end of this interactive webinar, and we hope you all are now more informed about the breast cancer and the menstrual hygiene with cervical cancer prevention in women. With the warm greetings for Vaishakhi, Vishu, and Bihu, we look forward to seeing you soon for the next episode of HFI's national webinar series featuring a new topic and with new perspective as well. But before bidding a goodbye, I would like to request everyone to please switch on their camera so that we can have a group photograph. One second, please. Yeah. So goodbye and take care of yourself and your loved ones too.